In this video, we will discuss what are hydrocarbons, what are its classifications. So first of all, what are hydrocarbons? So the organic compounds which contain carbon and hydrogen and are linked by a covalent bond. So what are hydrocarbon? These are the organic compound which contain carbon and hydrogen, and these atoms are linked to each other by the covalent bond, and that is why it is called as a hydrocarbon. Hydro stands for hydrogen, carbon stands for carbon. So which means the organic compound which contain mainly carbon and hydrogen in it and are linked together by a covalent bond is called a hydrocarbon. Now, depending upon the type of covalent bond, hydrocarbon is divided into two categories. One is known as the saturated hydrocarbon and other one is the unsaturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbon, the compound of carbon and hydrogen in which carbon atoms are linked to each other by the carbon-carbon single bond. So these are the hydrocarbon in which only single bond is present. Carbon-carbon single bond is present and it is known, and one of the important example of this category is alkane, which is also known as a saturated hydrocarbon, and one of the example of this category is the ethane here, where you can see two carbon atom are joined to each other by the single bond and 6 hydrogen are also singly bonded to the carbon atom. So saturated hydrocarbon, those compound in which carbon atom linked to each other by a single bond. Now next one is the unsaturated hydrocarbon, the hydrocarbon in which carbon atoms are linked to each other by at least one double bond, that is carbon-carbon double bond, or one triple bond. So how unsaturated different from the saturated? In the saturated only single bond is present, whereas in unsaturated it must contain at least one double bond or at least one triple bond in it. Now one of the example of unsaturated hydrocarbon, they are known as alkene when it contains a double bond, and if the compound contain a triple bond, it is known as an alkyne. Now the next important concept related to saturated and unsaturated, that is there any difference in reactivity of saturated or unsaturated, or we can say which one is more reactive and why. Now both in case of saturated and unsaturated, carbon is tetravalent. For example, here one carbon is forming the 4 bonds, 1, 2, 3, 4. Again in this case 1, 2, 3, 4. In this case 3 plus 1, 4. Which means valency of each carbon here is 4. So if valency is same and in all the cases it is tetravalent, then how can we explain the difference in reactivity? So all this explanation lie in this tetrahedral structure. So when carbon having valency 4, the structure is formed by this. So this geometry is called as a tetrahedral, and here angle is 109 degree. But in case of alkene, the angle between two carbon is 120 degree, whereas in case of alkyne it is 180 degree. Now because of this bond angle, there is difference in the reactivity. As we can say, in all these cases carbon is tetravalent, but the bond angle is different. Now due to which a strain is formed in these cases. Now to release this strain, the stress which is because the bond are very near to each other, due to which a strain is arises here. In order to release that strain, it react faster to achieve the tetrahedral geometry. अब जैसे ही इसमें एडिशन रिएक्शन होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा. तो अब ये क्या अरेंज, कौन सी अरेंजमेंट ले लेगा? टेट्राहेड्रल, एंड हेंस एवरी एल्कीन और अल्काइन react faster in order to achieve this tetrahedral arrangement. So next we will discuss the example of saturated hydrocarbon alkane in detail. Now what are alkane? Alkane are saturated hydrocarbon having journal formula CnH2n+2. So kindly learn this formula. Initially it will seems to be difficult, but ये बहुत ही easy है. जैसे ही आप values put करोगे, आपको different alkane family के members obtain होते जाएंगे. Now just for example, if n is 1, then the formula will be C1H2+2, 2 into 1 2, 2 plus 2 4. The formula will be
CH4, अगेन आई एम रिपीटिंग, यहाँ पे मैंने N की वैल्यू 1 पुट की तो फॉर्मूला क्या बना, C1, 2 + 2 4, तो CH4. अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, it is like this, one carbon is bonded to 4 hydrogen, and the name for this, a carbon compound having only one carbon in it, is known as meth word is used, so methane. This is a surname. Just for example, जैसे हम अपना नाम लिखते हैं with our surname. For example, if you are a जोशी फैमिली, तो आपके सभी घर के मेंबर्स के नाम के पीछे जोशी यूज़ होता है. तो ऐसे ही जो एल्केन फैमिली के मेंबर्स होंगे उनके सभी नेम्स की एंडिंग एन पर होगी. ठीक है. फॉर वन कार्बन इट इज़ मेथ, दैट इज़ मीथेन. व्हेन n is equal to 2, it is C2H6. How it comes? N2, 2 into 2 4, 4 plus 2 6. So C2H6 will be the formula. Now how to write the structure? 2 carbon are there. So first we will write these 2 carbon and we'll make a single bond because it is an alkane. Then we just write complete its valency to 4. जब भी आप एक बॉन्ड बनाएंगे उसके बाद कार्बन पे आपने टोटल 4 बॉन्ड लगाने हैं. देखो 1 2 3 4. अब इस कार्बन पे देखते हैं 1 2 3 4. अब अगर मैं यहाँ हाइड्रोजन प्लेस करूँ तो ये अपने आप ही 6 हैं. 1 2 3 4 5 6. अब जो 2 कार्बन एटम है उसके लिए जो रूट वर्ड होता है दैट इज एथ, और फैमिली इज एल्केन, सो इट इज इथेन. So for the next members I have already put here value. For n is equal to 3, just put this value in this general formula here, that is CnH2n plus 2. So when n is equal to 3, C3H6 plus 2 8, so it will be C3H8. It just 2, we are adding the double of this number. If it is C4 तो 4 का डबल कितना होगा 8, 8 plus 2 कितना हो जाएगा 10. Similarly C5, 5 का डबल कितना हुआ 10, और 10 plus 2 12. तो जितना ये वैल्यू है उसका डबल और प्लस 2 जर्नल फार्मूला होता है. ठीक है. अब मुझे इसका फार्मूला लिखना है तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, 3 कार्बन लिख दूँगी 1 2 and 3 एंड विल जॉइन देम. अब जो लास्ट कार्बन है उसमें एक वैलेंसी ऑलरेडी है तो अब सिर्फ मुझे 3 वैलेंसी बनानी है. अगेन ये लास्ट कार्बन है, एक वैलेंसी ऑलरेडी है तो 1 2 and 3. बट सेंटर वाले में 2 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं और टोटल कितने बॉन्ड होने चाहिए 4. तो 1 2 तो कम्प्लीटली 4 हो गया और सब जगह पे मैं हाइड्रोजन अटैच कर दूंगी. ठीक है. जस्ट डूइंग इट फास्ट. अब जो 3 कार्बन की चेन है उसके लिए जो वर्ड दिया जाता है दैट इज प्रोप, एंड बिकॉज इट इज बिलोंग टू एल्केन फैमिली सो इट इज प्रोपेन. अगेन C4 अगर मुझे अटैच करना है, ठीक है, 4 कार्बन, सो 1 2 3 4. अगेन देखो लास्ट कार्बन पे मुझे कितनी वैलेंसी चाहिए, हर एक कार्बन पे मुझे 4 वैलेंसी चाहिए. तो एक ऑलरेडी यहाँ पे है तो 1 2 3 4 ये हो गया 1 2 3 4. अब ऐसे ही जो बीच वाले कार्बन है अब इसमें ऑलरेडी 2 वैलेंसी ऑलरेडी हैं तो इस कार्बन पे 2 वैलेंसी कंप्लीट है 3 4 1 2 3 4. सो कितने हो गए C4H10 1 2 3 4 C4H10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. एंड फॉर द 4 कार्बन द वर्ड इज ब्यूट और आगे हम क्या लगा देंगे एन, ब्यूटेन. सो 1 कार्बन इट इज मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन. सो दिस इज फॉर द 5 कार्बन. फर्स्ट राइट द 5 कार्बन. फॉर ईच कार्बन मेक 4 वैलेंसी एंड द नेम फॉर दिस विल बी 5 स्टैंड्स फॉर पेंट, पेंटेन. नाउ आई थिंक यू कैन ईजिली डू फर्दर कैलकुलेशन हेयर. अगर 6 कार्बन है 6 का डबल कितना हुआ 12, 12 plus 2 14. 7 का डबल 14 होता है प्लस 2 16. 8 का डबल 16 plus 2 18. ठीक है. अब यहाँ थोड़ा स्पेस कम है बट ऐसे ही आपने 6 कार्बन की चेन बनानी है और सब जगह. अब जो इसका नेमिंग दिया जाएगा 6 स्टैंड्स फॉर हेक्स, हेक्सेन. 7 स्टैंड्स फॉर हेप्ट, हेप्टेन. 8 स्टैंड्स फॉर ऑक्ट. ये आप मैथ से हेक्सागन जैसे बनाते हैं, पेंटागन. ठीक है. ऑक्टागन 8 से ऑक्टेन.